हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम समझेंगे लीनियर रिग्रेशन के बारे में। जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन है उसके बारे में समझेंगे और उसके उसके लीनियर रिग्रेशन का मैथमेटिकल इंट्यूशन समझेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक कोड के थ्रू भी समझेंगे कि लीनियर रिग्रेशन कैसे काम कर रहा है। तो टू स्टार्ट ऑफ विथ शुरू करते हैं। सो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन जो है that can be of basically can be broadly divided into three types and having said that ये तीनों similarly काम करते हैं सेम वे में with slight changes in the data। इनपुट डेटा में जैसा चेंज रहेगा, जिस टाइप का इनपुट डेटा है, जिस डायमेंशन का इनपुट डेटा है, उसके हिसाब से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो टाइप है हमारे पास वो है हमारा, इसको हम बोलते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन। जो दूसरा है उसको बोलते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन एंड जो थर्ड टाइप है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन। तो इसमें सिंपल लीनियर रिग्रेशन और जो मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन है, इसमें बस इनपुट डेटा में जब डायमेंशन चेंज होता है तो उसमें हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक इनपुट है जैसे कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्सेस सैलरी, तो वहाँ पे हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। जब आपके पास मोर देन वन इनपुट वेरिएबल्स है जैसे कि ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वर्सेस लेट्स से स्किल वर्सेस सैलरी, तो यहाँ पे मोर देन टू इनपुट वेरिएबल्स है, तो इस केस में हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। पॉलिनोमियल लीनियर रिग्रेशन कब यूज करते हैं इस पे हम डिस्कस करेंगे, इन दोनों पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन और मल्टीपल डिस्कस करने के बाद, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि हम कब अप्लाई करते हैं उसको हम देखेंगे, बट हम शुरुआत करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के साथ। तो फ्रेंड्स, हाँ, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन के साथ। जस्ट एक सेकंड में ये क्लियर कर लेता हूँ बोर्ड को। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विथ simple linear regression. So first of all, just a minute, मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, सिंपल लीनियर रिग्रेशन SLR। तो सबसे पहले रिग्रेशन हम यूज कब करते हैं? रिग्रेशन हम तब यूज करते हैं जब हमें कंटिन्यूअस वैल्यूज प्रेडिक्ट करने हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस of somebody who's working in let's say IT sector and versus his salary। so यहाँ पे जो years of experience है ये हमारा input variable है, या फिर इसको हम फीचर भी कहते हैं, इनपुट फीचर बेसिकली, और जो सैलरी है वो हमारा टारगेट कॉलम है। सो हमें गिवन द नंबर ऑफ ईयर्स हमें सैलरी प्रिडिक्ट करनी है। तो इसके लिए हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन यूज कर सकते हैं। So now let's try to understand certain conditions to understand or to consider before starting simple linear regression। तो simple linear regression शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारा जो डेटा है उसका क्या नेचर है। Now when I say डेटा का क्या नेचर है, what I mean to say is the data linearly spread। So डेटा जो है आपका वो linear होना चाहिए first of all। So if we talk about the data which we are talking, this is the years versus salary। so इसको हम सबसे पहले एक प्लॉट करके देख सकते हैं कि ये इसका स्प्रेड कैसा है। फॉर एग्जांपल, इस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे हमने ईयर्स ले लिया और इधर सैलरी ले लिया। सो यहाँ पे ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं आपके, इस दोनों में एक लीनियर रिलेशन होना चाहिए। जस्ट वन सेकेंड। So for example, if you plot these two variables on a graph, so there should be sort of linear relation।
So by that I mean जैसा जैसा years of experience बढ़ रहा है, salary is also increasing in a linear fashion. It is not perfectly linear, but what we call is this is sort of linear data. सबसे पहले ये कंडीशन तो फुलफिल होना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट यूजिंग लीनियर रिग्रेशन. सो बेसिकली डेटा परफेक्टली लीनियर नहीं हो, that is okay, but data should be sort of linear at least, in which there is a there is the trend that with increasing the years of experience, salary also as you can see is increasing. So एक ये linear relation establish हो रहा है दोनों variable के बीच में. Now having said that, हम अभी डिस्कस करेंगे जो साइकिट लर्न जो पैकेज है हमारे, इसको हम एसके लर्न भी कहते हैं. इस एसके लर्न में जो एक लीनियर रिग्रेसर का क्लास है, ये कैसे काम करता है? तो बेसिकली ये काम करता है ऑन समथिंग कॉल्ड एज ओएलएस मेथड. ये ओएलएस मेथड क्या है? दिस इज नथिंग बट ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स. ये ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर्स जो मेथड है इसके ऊपर काम करता है. इसका एक और भी तरीका है जिसके थ्रू हम लीनियर रिग्रेशन कर सकते हैं, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ग्रेडियंट डिसेंट. but in this video what we are going to discuss is basically ये OLS मेथड को हम डिस्कस करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियोस में हम इसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट पे भी बात करेंगे, बट अभी के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं ये OLS मेथड which is used by the linear regressor class in scalar. So now let me first of all clean the area. So now ये कैसे काम करता है, तो शुरू करते हैं. सबसे पहले आपके पास लेट्स से years of experience है versus salary है. This is basically the data. This is the input. This is the output. So now linear regression क्या करता है कि it tries to find a best fit line, something called as a best fit line. So now what is the best fit line? Let's try to understand this. So now let's say when you plot these two features on a graph, this is basically years and this is salary, and just a second, ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. Yes, यहाँ पे if you plot it, let's say you have plotted it and there's this data is sort of linear data as we already discussed. ये सब points आपने plot कर लिया. So now what linear regression tries to achieve is it tries to create a best fit line. Now वो best fit line क्या होगा? So basically ऐसा एक लाइन क्रिएट करने का ट्राई करता है. So ये बेस्ट फिट लाइन का मतलब ये होता है कि विच ये सबसे कम मिस्टेक्स करेगा इस डेटा के ऊपर. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दिस लाइन इज क्लोजेस्ट टू ऑल द पॉइंट्स. तो हमारा बेसिक टारगेट ये है कि एक ऐसा लाइन क्रिएट करना है जो कि सारे पॉइंट्स से क्लोजेस्ट हो. सिंस दिस इज नॉट परफेक्टली लीनियर डेटा, सो ऑल द पॉइंट्स कैन नॉट पास और कैन नॉट लाई ऑन दिस लाइन, बट द टारगेट इज on this sort of linear data जो कि linear जैसा है, it is not perfectly linear, this line should be closest to all the points. So basically if I have to tell you what is the best fit line, so basically a best fit line is the line which is closest to all the points in very simple terms. So हमारा जो SK learn है ये best fit line find करने का कोशिश करता है, and वो best fit line find करता है उसके, and basis on that the predictions are done. सो नाउ ये कैसे होता है प्रेडिक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल ये बेस्ट फिट लाइन कैसे क्रिएट होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. तो एक जो स्ट्रेट लाइन होती है उसका जो इक्वेशन होगा mx प्लस बी, लेट्स से
So to find a straight line, we must find the slope first and also the intercept. हमको ये m का वैल्यू और b का वैल्यू निकालना पड़ेगा. ये जो इनपुट है ये ऑलरेडी वी हैव, विच इज नथिंग बट द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, और दिस y and this y we have to find. This y needs to be found out. और तो इस इक्वेशन में जो अननोन्स है वो m and b है. सो एज यू नो, अगर हमारे पास टू अननोन्स है तो हमें टू इक्वेशंस चाहिए इन टू अननोन्स की वैल्यू को फाइंड करने के लिए. So now after a while we will see how to find this m and b, but now let's check out कि loss function क्या है. What is the concept of loss function here? So let's say this is again we are drawing a graph. So we'll take lesser points just for the purpose of explaining. तो एक पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर है, as you can see this is sort of linear relation. This is years, this is salary. तो अगर इस पे हम एक बेस्ट फिट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें, जस्ट अ सेकेंड. तो ये बेस्ट फिट लाइन, लेट्स से दिस इज द बेस्ट फिट लाइन विच वी गेट. ठीक है. सो नाउ हमें यहाँ पे अपना लॉस फंक्शन निकालना है, जिसको कि हम यूज करेंगे टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड b बेसिकली. सो लॉस फंक्शन या फिर कॉस्ट फंक्शन या फिर एरर फंक्शन हम उसको बोल सकते हैं. तो दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस between the actual value and the predicted. So basically इस point के लिए let's say यहाँ पर number of years of experience is let's say 3 years. So the actual salary was this red point, but our model predicted this point. I'll show you exactly which point I'm talking about. Our model predicted this. Similarly, let's say for this point, let's say the years of experience was 2 years. So salary was this red point, but our model predicted this point. So now the distance between these, let's say this distance or this distance, similarly this distance and this distance and this distance. So these are the errors. So इसको हम लॉस भी कह सकते हैं कि हमारा मॉडल इतने वैल्यू से डेविएट कर रहा है एक्चुअल प्रेडिक्शन. हमारा जो प्रेडिक्शन है दैट इज डेविएटिंग फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू बाय दिस मच क्वांटिटी. तो इस केस में हम इसको, ये जो लॉस फंक्शन है हमारा, उसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि it is nothing but L is equal to, let's say this value is E1, this is E2, this is E3, this is E4, this is E5. So this loss will be E1 square plus E2 square plus E3 square plus, let's say there are n points, so basically En square. Okay. So secondly, इसमें आप there's a question that हमने square क्यों किया इसको. We could have taken it simply E1 E2 till En. So basically we take the square because first of all these values can be either positive or negative depending on whether the actual point is below this line or above this. So basically one of the reasons to eliminate that positive and negative issue, we are just concerned about the values and not about the positive or negative or the sign of the values. And secondly,
And the second reason which is the which due to which we took squares we will discuss in a while. हम उस पे आते हैं थोड़ी देर में because that will be a little difficult to understand right now. So now इसको हम ऐसे लिख सकते हैं L is equal to I is equal to 1 to N E I square. ये हमारा एरर फंक्शन है, इसको हम बोलेंगे एरर फंक्शन. So now we have to find this m and b values such that this error function is minimum. हमें इस this error function को minimize करना है, and for that we'll have to find such values of m and b for which this loss function is minimum. So now let's try to understand how to do that. Let me clear the board first. So as we saw, the loss function is basically nothing but, just a second, one to n ei square. Okay, and this ei is nothing but y minus y hat, and putting I here. Okay, so this is so yi is basically the actual value which we saw in red points, and this yi dash is basically predicted values. So now we can write our loss function as L is equal to n yi minus yi hat whole square. Okay, and this yi hat is nothing but mxi plus b, as we just now saw. So now we can write this as we can modify this equation as, putting this value here, yi is equal to mxi minus b whole square. So now you see this equation of the loss function basically includes or depends on m and b. This yi is already given, x is basically the input. So now the only two things on which this loss function depends or varies is this value of this slope and value of intercept. Okay, so now we can see a direct relation between loss and m and b, slope and intercept. So changing m and b will lead to change in the loss function, but the condition is we have to change, or we have to find m and b such that this loss function is minimum. So we have to minimize the loss function using using values of slope and intercept such that the loss is minimum. So to do that, basically मैं सबसे पहले यहाँ बना लेता हूँ, हमें पार्शियल डेरिवेटिव लेना होगा इसका. तो so as you know the slope, so there are 2 points basically. Slope is 0 at minimum
and the second point is slope is nothing but it is derivative. Okay, so now if we see the slope at this point will be 0 at the minimum, so this is nothing but error, and let's say this is the weights or the coefficients, sorry, this is coefficient, so the slope will be 0 at minimum. Okay, so now keeping that in mind, हम इस लॉस फंक्शन को पार्शियली इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू m and with respect to b separately. So और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे. So इस दोनों को 0 से इक्वेट करने के बाद we will get two equations. And now solving those two equations will give us the value of m and b. Okay. So हम इसको derive नहीं करने वाले हैं, पूरा full process में derivation will take some time and it is actually that derivation is not asked anywhere as in, but हम क्या करेंगे कि हम उसका जो final output है इस derivation का उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. So after you find the partial derivative of m and of the loss function with respect to m and b, so आपका output क्या आएगा? सबसे पहले the value of b which you will get is mean of y minus slope mean of sorry, one second. Mean of x and जो slope का जो फॉर्मूला आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, I is equal to 1 to n xi minus x bar, this is nothing but the mean, yi minus y bar or y mean, and divided by one to n xi minus x bar whole square. So this will be the formula for mean using, so these two are the not mean, sorry, this is the formula for the slope. So these two are the formulas which we use in the OLS method, or the sklearn uses in the OLS method to find b and m such that find b and m such that loss is minimum. So basically this was the concept for linear regression or simple linear regression. So now इसमें हमें और क्या चीज़ें देखनी है, इसमें हमें देखना होगा कि हम इस मॉडल को इवेलुएट कैसे करते हैं. By that I mean कि जैसे आपने अपना मॉडल बना लिया linear regression का, it gives you certain predictions, तो now how do you know how good is your model? So उसके लिए जो कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें से few options are mean absolute error, second is mean squared error, third is root mean squared error, and fourth is
R2 स्कोर। सो इन चारों का यूज़ करके हम ये फिगर आउट कर सकते हैं कि हाउ इज़ द मॉडल परफॉर्मेंस। सो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक कोड के थ्रू भी समझेंगे लीनियर रिग्रेशन की जो फंक्शनिंग है यूजिंग ए स्केलर, and after that we will discuss about the multiple linear regression and polynomial linear regression. सो इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू कंसिडर subscribing the channel if you have not done already, and also like the video, and share the video with your friends.